Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आइए आरंभ करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Domestic stocks log modest gains amid a positive global cues. Sensex finishes near 59,800. Nifty settles near 17,850 level. The rupee appreciates by 13 paise against the US dollar, and Brent crude oil prices rise to trade around $91 per barrel. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों पर घरेलू शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 59,800 के नजदीक पहुंचा। निफ्टी 17,850 के नजदीक आया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया हुआ 13 पैसे मजबूत, और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत बढ़कर $91 प्रति बैरल के आसपास पहुंची। आइए अब समाचारों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले घरेलू शेयर बाजार, और उससे भी पहले हम आमंत्रित करना चाहेंगे कार्यक्रम में ऑनलाइन चर्चा के लिए शेयर बाजार के जाने माने विशेषज्ञ पुनीत जैन को। पुनीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी। घरेलू शेयर बाजार में आज कुल मिलाकर लिवाली तेज रही, हालांकि उतार चढ़ाव का भी असर बाजार में देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सकारात्मक संकेत मिला और आखिरकार प्रमुख सूचकांक थोड़ी सी बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 105 अंक यानी 0.19% की बढ़त लेकर 59,794 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 35 अंक यानी 0.19% बढ़कर 17,833 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो वहां भी लिवाली देखने को मिली। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.16% लाभ में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.18% बढ़कर बंद हुआ। Key domestic stock indices today witnessed modest gains. Sensex and Nifty both gained amid positive global cues. Sensex finished near 59,800 points, while Nifty settled near 17,850. Sensex rose by 105 points or 0.18% to close at 59,793. Nifty was also up by 35 points or 0.19% to end at 17,833. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index climbed 0.16% and the small-cap index ended 0.18% up. In the Sensex pack, 13 companies posted gains while 17 logged losses. Tech Mahindra climbed 3.3% and IndusInd Bank gained 2.6%. Infosys added 2.4% and HCL Tech surged 1.9%. On the other hand, Ultra Tech Cement tumbled 1.9% and Mahindra plunged 1.4%. Larsen & Toubro declined 1.3% and Nestle India ended 1% down. In sectoral indices at the BSE, 10 sectors gained while 9 logged losses. IT sector rose the most as it added 2.1% and tech gained 1.6%. Metal and Bankex both surged 0.5% each. On the other side, telecom fell by 0.7%, utilities sector slipped 0.6%, power and realty both declined 0.5% each. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,687 companies gained, but 1,756 companies fell. Shares of 128 companies remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 13 पैसे मजबूत हुआ, 79.58 रुपये पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 1% घटकर 108.63 पर चल रहा था। पुनीत जी, बाजार में आज यानी कारोबारी सप्ताह का समापन हो रहा है और घरेलू शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव हमने देखा, हालांकि बढ़त के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक किन अर्थों में ले रहे कारोबार को? मनोज जी देखिए, ये पूरा सप्ताह काफी भारतीय बाजारों के लिए काफी पॉजिटिव था।
और मुझे लगता है कि आज बाजार में जो ट्रेंड हमने देखा उसको प्रॉफिट बुकिंग उसमें रही। यदि हम देखें तो बाजार काफी अच्छा खुला था और वहां पर काफी लार्ज कैप्स में बाइंग थी, लेकिन जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स थे वहां पर हमने शुरुआती दौर से ही प्रॉफिट बुकिंग देखी। कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी, पर मैं ये कहूंगा कि थोड़ी बिकवाली थी वहां पर। और मैं ये मानता हूं कि प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा रही, कोई स्ट्रक्चरल कोई चेंज नहीं है मार्केट के अंदर। इनफैक्ट अगर आप फिगर्स देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी आज भी काफी बाइंग करी, 2000 करोड़ से ऊपर की आज फॉरेन इन्वेस्टर्स की बाइंग रही है। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, म्यूचुअल फंड्स हैं, उनकी सेलिंग रही आज 1200 करोड़ के आसपास की। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि फिलहाल डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, और क्योंकि बाजार जो है वो करीब करीब न्यू हाई के आसपास चल रहा है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, तो वहां हमने देखा है कि अब इन्वेस्टर्स काफी स्मार्ट हुए हैं, काफी सैवी इन्वेस्टर्स हुए हैं और उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी है। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक से फिर एक नया दौर शुरू होगा बाजार में। Puneet, it appears that the last 30 minutes of trade saw the volatility index go up by 40 basis points. We're still under 18 on the VIX scale. The news that dominated both on the market and the trading front was cement stocks, which is part of the basic materials Nifty index, and that went down marginally by 12 points. There's also the case before the Competition Commission of India. What is the scope for basic materials? You have companies apart from cement like Asian Paints do very well. What's your advice? So Arjun, as far as cement stocks are concerned, we have seen that these stocks have really gone up a lot. In fact, till today, the open offer for ACC and Ambuja from Adani Group was open, and it will close over the weekend. So that was also supporting cement stocks. But overall, we have seen there is a very, very big consolidation happening, and companies they're being talked about being taken over, smaller companies by larger companies. So the cement stocks are really hot in a way. Of course, given the fact that there is a capex cycle which is turning up in India, we have seen the road project also doing very well, and most of the new highways are being constructed with cement only. And overall, the national infrastructure pipeline getting a big boost from the government. I think construction basic materials stocks, basic materials companies, as you mentioned, they're likely to do well. Paint stocks, as you mentioned, they also did well this week, largely because their major raw material is crude oil, and we saw a very big fall in crude oil, and therefore the margins for paint companies are likely to expand. So there were these micro events happening for various sectors, but overall I think the sentiment is positive for basic and infrastructure companies, and that is why this sector is getting a push. If you look at even at capital goods companies, construction companies like L&T, they have been at the forefront of this rally that we have seen in the past few days. Well, for the week you mentioned the market went up by 1.7%. You mentioned about the FII buying interest today. They were net buyers. DIIs were net sellers. What does next week hold? What are the positions open on the F&O front? So Arjun, in fact, F&O positions we have carefully studied, and from the beginning of this month, what we saw was, which is unusual, it doesn't happen usually, that the call option premiums were much higher than the put option premiums. Usually put options are more expensive because there's a fear factor in puts and people are buying puts for safety. But since the beginning of this month, we saw that the call option premiums were much higher, indicating that people in general are bullish on the market. Now that is kind of wearing off a little bit, so we have seen some parity between put and call option, but still I think the build-up suggests that the market is in positive mood, I would say. Of course, next week onward, we'll get closer to the US Fed meeting on 22nd of September, which is important for the markets. Already, we have an expectation that they will be aggressive. But even then, market would like to see what is the commentary from US Fed. So I think my own guess is next week, for next couple of weeks, we're going to see a market which will trade in a narrow range with some apprehensions. And I think it will settle down only after a couple of weeks.
पुनीत जी, यानी आपने अभी चर्चा की कि जो निवेशक हैं, खासतौर से जो भारतीय निवेशक हैं, उनमें एक स्मार्टनेस देखी जा रही है। तो हम ये आम लोगों की हित में कह लें, जो हमारे श्रोता हैं उनके हित में समझना चाहेंगे कि बाजार जब अपने उच्चतम स्तर के नजदीक है, वैसे में यह जो स्मार्ट निवेश होता है वह कहां से और कैसे, किस रूप में यानी अपने निवेश पर अधिक से अधिक लाभ कमाने को प्रेरित करता है, किस रूप में यह हो पाता है? आपने अच्छा सवाल पूछा मनोज जी। बेसिकली हम ये मानते हैं कि जो जागरूक इन्वेस्टर्स हैं, जो एक्टिवली मार्केट को समझते हैं, वो ये देखते हैं कि जब बाजार बहुत गर्म होता है या बहुत वैल्यूएशन हाई हो जाती है शॉर्ट टर्म में, तो वो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं एक सेफ्टी, ताकि अगर बाजार किसी वजह से गिरता है तो वो नीचे से बाइंग कर सकते हैं। और इस प्रकार से वो एक तो प्रॉफिट बुक भी करते हैं और एक अपने को सेफ भी रखते हैं। मैं आपको आंकड़ा देता हूँ, बड़ा सरप्राइजिंग आंकड़ा है। जब बाजार मई, जून, जुलाई में जब बाजार गिर रहे थे, तो हम देख रहे थे कि म्यूचुअल फंड में इनफ्लोज जो थे वो रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गए थे। अगस्त के महीने में जब बाजार में हमने अच्छी खासी तेजी देखी, तो म्यूचुअल फंड इनफ्लोज 10 महीने के नीचे स्तर पर आ गए। यानी ऑल्दो एसआईपीज जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, वहां तो हमने अच्छा इनफ्लो देखा, 12,000 करोड़ से ऊपर का इनफ्लो था। लेकिन ओवरऑल इक्विटी में करीब 6,000 करोड़ की वहां से बाकी स्कीम से विड्रॉवल थी। यानी जब बाजार ऊपर आए तेजी से, तो इन्वेस्टर्स ने वहां बेच करके कुछ प्रॉफिट बुकिंग करी और कुछ पैसा उन्होंने निकाला। तो ये एक स्मार्टनेस है इन्वेस्टर्स के लिए कि वो जो वैसे ट्रेड कर रहे हैं, जो एसआईपी कर रहे हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है इस प्रकार इस डायरेक्शन में कोई अपना ज्यादा उपयोग लगाने की। लेकिन जो ट्रेडर्स हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये स्मार्टनेस होती है कि वो जब वैल्यूएशन बढ़े या बाजार में जल्दी से बहुत फास्ट रिकवरी या रैली आए, तो थोड़ा वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और यही हम मार्केट में स्मार्टनेस मानते हैं कि प्रॉफिट भी बुक करते रहिए, निवेश भी करते रहिए, उससे अपना रिटर्न्स जो है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है। Profit booking and smart trading. What about Bank Nifty? We discussed that on Money Matters in the afternoon program as well. The index went up by 207 points. Commercial banking is all linked to central banks' policy decisions. It's also linked indirectly to what the Fed has to announce, as you mentioned, on the 22nd, 23rd. How do you see Bank Nifty right now, and what would you advise investors? So, Arjun, there are two things happening with vis-a-vis banking stocks right now. So, one is the macro story. What is happening to Indian industry, Indian economy? And if we see that, Indian economy seems to be doing very well. We had a GDP data, although it was some kind of an aberration, but 13% plus GDP growth is, of course, very healthy. We expect the GDP growth for the year to be 7.5%, making India the fastest growing economy. And such a fast pace of GDP growth will require credit from banks. And the macro story is that banks are doing very well as far as credit growth is concerned. Credit growth is at a multi-year high of about 15% right now. So you can imagine that banking profits will rise. We also know that capex cycle, new factories are being set up, new investments are being made. So clearly the environment is very positive for Indian banks. Internationally, of course, there are challenges in terms of interest rates. But in India, we have seen although interest rates went up, but they have not reduced credit uptake or credit appetite among businessmen. So that is as far as banks are concerned. Also, at the same time, we find that the margins for banks and valuations for banks are still very attractive. And therefore, last week, at the micro level I'm talking now, the PSU banks did very well. The PSU banking stocks, they were in fact the best performing sector in the Nifty, and they went about average 2%, and many stocks are still very attractively priced. So I think investors, like I said earlier, are very smart now. They know which sectors are growing, which are doing well. And therefore, I think they expect September quarter results to be very good for banks, particularly PSU banks. And therefore, I think that sector is doing very well. पुनीत जी, पिछले 2 साल हमने कोविड के प्रभाव में दुनिया की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ते देखा। पिछले 6 महीने या कुछ और अधिक समय ले तो रूस और यूक्रेन के बीच में जो संघर्ष हुआ और उससे जो हालात पैदा हुए, उनमें दुनिया को मतलब कह लीजिए कि जूझते हुए देखा। और अभी मुद्रास्फीति का मुद्दा हावी है। वैसे में घरेलू निवेशक के लिए जो भारत के वृहत आर्थिक हालात हैं, उसमें अगले 6 महीने साल भर के लिए हम सेक्टर के हिसाब से निवेश करना चाहें और समझना चाहें कि हमें कौन सा सेक्टर अधिक लाभप्रद हो सकता है, तो 1-2 वर्ष की अवधि के लिए कौन से सेक्टर होते हैं जो उभर के आ सकते हैं और जिनमें अपेक्षाकृत बेहतर निवेश का फल मिलेगा, आपको लगता है?
तो मनोज जी, जैसा आपने कहा कि भारत की जो स्थिति है वो पूरे विश्व में इस वक्त काफी फेवरेबल है। इनफैक्ट बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हाउसेज भी ये बात कर रहे हैं कि इंडिया इज द बीकन ऑफ होप in a world which has a lot of tensions and stresses. तो मैं ये कहूंगा कि जो सेक्टर्स हमें अच्छे लग रहे हैं, जैसे अभी मैंने बात कहा पीएसयू बैंक, इनफैक्ट पब्लिक सेक्टर पूरा जो सरकारी क्षेत्र है वहां पर बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, बहुत अंडर वैल्यूड सेक्टर है ये। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सेक्टर में निवेशकों के लिए अभी भी बहुत अच्छा स्कोप है। अच्छी कंपनी में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल है, हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज है। दूसरा मुझे लगता है कि जो कैपिटल गुड्स कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, वहां पर क्योंकि हम केपेक्स साइकिल में हम देख रहे हैं पिकअप आ रहा है। सीमेंट सेक्टर की हमने बात करी, आप रियल एस्टेट सेक्टर है वहां बहुत अच्छा पिकअप हम देख रहे हैं। तो ये जो सेक्टर्स हैं, बैंकिंग है, सीमेंट है, रियल एस्टेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैपिटल गुड्स है, मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी बहुत स्कोप है। यहाँ शेयर्स में अभी ग्रोथ का आने वाला टाइम जो है उसमें हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें काफी फायदा हो सकता है। We're heading for a short commercial break, so please stay tuned on Market Mantra. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 8700014242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242। Welcome back to Market Mantra. We were discussing about the market developments today with our market expert Puneet Jain. Puneet, once again, a warm welcome to you on the program. And I hope you're still with us online, Puneet. Yeah, sure. So the rupee has appreciated by 13 paise against the US dollar. I believe it's at 79.58 right now. How strong is its valuation right now, especially with the dollar strengthening against the rupee and against other major currencies? So today, in fact, the US dollar weakened quite a lot, in fact, almost 1%. And from a high of about 110, the dollar index went down to about 109. So to that extent, I think this was welcome, largely because euro and Japanese yen, they strengthened. Interestingly, throughout this entire mayhem in the currency market, because there is a lot of concern about euro, pound and yen, which are very strong currencies otherwise, the Indian rupee has remained relatively stable, and we have been able to maintain that psychological level of around 80 rupees to the dollar, which is very important because our entire trade and investments, they depend on that sentiment. And RBI has done a remarkable job of maintaining stability, and there is no concern, no rush for importers or exporters to convert the currency. So I think rupee has remained very stable, and we have very large foreign exchange reserves. Even after a very big drawdown over last 1 year, we still have more than $560 billion in foreign exchange reserves and a few forwards. So clearly, I think the rupee is in okay space, in happy space, not happy space, but is in stable space, and that is what RBI wants. My own guess is that going forward, we will see rupee remain in a narrow range. It is unlikely that dollar will strengthen significantly from current levels, because euro in the ECB they've started raising rates, so euro will stop weakening. Similarly, we're expecting some intervention in Japan. So clearly, I think the dollar index should stabilize at current levels, and therefore the rupee also. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज मुख्य रूप से लिवाली तेज रही है। अमेरिका में कल हुई लिवाली का एशियाई निवेशकों पर आज अनुकूल असर दिखा। हांगकांग का हैंग सेंग 2.7% की शानदार बढ़त लेकर बंद हुआ। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.8% की वृद्धि हुई, जबकि सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.9% लाभ के साथ बंद हुआ। जापान के निक्केई 225 में 0.5% की बढ़ोतरी हुई। उधर दक्षिण कोरिया में सार्वजनिक अवकाश के कारण कामकाज बंद रहा। यूरोपीय शेयर बाजारों पर ध्यान दें तो अंतर्देशीय कारोबार में लंदन का FTSE 100, जर्मनी का डेक्स और फ्रांस का CAC 40 तीनों प्रमुख सूचकांक लगभग 1.5% बढ़त के साथ चल रहे थे। Puneet, what's your take on the Goldman Sachs report on China, saying that
because of the lockdown, 35% of China's GDP is being impacted. So we have been getting data out of China and there are various reports, but broadly I think China's GDP and economic growth is getting hurt. Now we don't know whether it is because of lockdown or is it because of actual genuine turndown in China's exports, demand for Chinese products. We still don't know, but definitely the GDP is down and we expect the GDP growth to be hardly 2 to 3% this year. And I think China is facing a lot of problems in terms of their property market, in terms of the banks. They are unable to, earlier China would just announce some stimulus and they will pump in a lot of money into the markets and suddenly we'll see the markets go up and economy pick up a lot. What interestingly we have seen is in the first time in 20 years, China's efforts at pumping up the economy have failed. They announced many stimulus packages, then they intervened in the stock markets also, and still we saw that the markets did not respond. So I think that is a big difference that is there in China. China is going to face a long road back to recovery. They're not, that economy is not coming back in a hurry because they have to solve a lot of domestic issues over the next few years. And what's your take on the European indices? They in fact all went up. If you look at FTSE, Euronext, CAC 40, DAX, Swiss Market Index. So clearly, right now the mood in the markets is risk on because the US markets did very well yesterday. Today also the Dow Jones futures are up by more than 250 points. So clearly right now investors are in a positive mood. I think once this US Fed hike in September end, that is out of our way, I think markets will stabilize. And right now, investors are just digesting that possibility and then they're investing. But I would say overall, I think it's quite positive. The markets haven't really crashed despite such high interest rates. Well, there's a dependence on oil and gas from Russia. The Ukraine crisis has put the inflation at risk. What's your take on that as far as the European markets are concerned, even though they were trading in the green? See, the biggest problem from Russian supplies or disruption in Russian supplies actually came in Europe. And that is what disrupted the whole world. So Europe was almost dependent on Russia for about 30% of its requirements, 30 to 35% of its gas requirements. Now that got stopped. So Europe's dependence is now down to 9%. My own guess is that by next year, Europe will be able to reduce its dependence on Russian oil and gas significantly, even further. It may go down to even zero by next year. So clearly, I think this crisis has a longevity of only about a few months or maybe 1 year. But in the long term, I'm sure Europe will resolve its energy crisis. And once that happens, I think the global energy markets, they will resolve it themselves pretty well because there's a lot of oil out there. I mean, it's there in storages or it's being held because of speculation. So my own guess is that energy crisis has a life of at the most 6 to 9 months. और पुनीत जी, यहाँ पर एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि रूस ने अपने तेल के निर्यात के सिलसिले में जो एक नया चलन कह लें कि शुरू किया है कि वह अपनी मुद्रा में अन्य देशों के साथ कारोबार के संबंध स्थापित कर रहा है, क्या ये चलन आने वाले दिनों में हमें डॉलर को तेल बाजार से रिप्लेस करता हुआ दिख रहा? नहीं, देखिए मनोज जी, पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो आज क्योंकि रशियन ऑयल की बहुत ज्यादा डिमांड है, शॉर्टेज है ऑयल मार्केट में, एक पैनिक है, इसलिए वो ऐसी डिमांड कर पा रहे हैं। कल जब ये मार्केट स्टेबलाइज हो जाएंगी और ऑयल सरप्लस होगा तो रशिया के पास ऐसा कोई लीवर ही नहीं होगा। और दुनिया में कोई भी, देखिए ये डिमांड वो कर रहे हैं यूरोप से बेसिकली कि आप हमें रूबल्स में पेमेंट कीजिए, वो रूबल्स को स्टेबलाइज करना चाह रहे थे। लेकिन जब ये एनर्जी क्राइसिस ही नहीं रहेगा 6 से 9 महीने में या साल भर में, तो यूरोप के पास कोई तरीका ही नहीं, रशिया के पास कोई तरीका नहीं होगा इस प्रकार की डिमांड करने का। Well, moving on to the U.S. stock market right now. Global stocks and government bond yields rose yesterday after the European Central Bank raised interest rates by a record 75 basis points. And the Fed Reserve Chairman Jerome Powell said the U.S. Central Bank was strongly committed to controlling inflation. The Dow Jones Industrial Average Index gained 0.6% and the Nasdaq Composite Index both gained 0.6%. The S&P 500 rose 0.4%. खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नियमित बैंकिंग व्यवस्था के बाहर अवैध ऋण ऐप से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक के दौरान श्रीमती सीतारमण ने अवैध ऋण ऐप के बढ़ते मामलों पर ध्यान आकृष्ट करते हुए विशेष रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के लोगों को अत्यधिक उच्च ब्याज दरों पर ऋण की पेशकश और भयादोहन, आपराधिक धमकी से युक्त वसूली प्रथाओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने धन शोधन, कर चोरी, डेटा की गोपनीयता और अनियमित भुगतान एग्रीगेटर्स, छद्म कंपनियों के इस तरह के कार्यों को अंजाम देने की संभावना पर भी ध्यान दिया। मंत्रालय ने कहा कि इस मुद्दे के कानूनी, प्रक्रियात्मक और तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत विचार विमर्श के बाद ये फैसला किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक सभी कानूनी ऐप्स की श्वेत सूची तैयार करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ये सुनिश्चित करेगा कि केवल इन श्वेत सूची वाले ऐप्स को ही ऐप स्टोर पर उपलब्ध होने दिया जाए। आरबीआई यह सुनिश्चित करेगा कि भुगतान एग्रीगेटर्स का पंजीकरण एक समय सीमा के भीतर पूरा हो जाए और उसके बाद किसी भी अपंजीकृत भुगतान एग्रीगेटर को काम करने की अनुमति नहीं हो। सभी मंत्रालय और एजेंसियां ऐसे अवैध ऋण ऐप के संचालन को रोकने के लिए हर संभव कार्रवाई करेंगी। यहां पर आपके विचारों को हम समझना चाहेंगे कि किस रूप में यह संभव हो सकेगा और कितना लाभ मिल पाएगा अवैध जो लोन का एक कह लें कि बड़ा जाल फैल गया है उस पर। बिल्कुल, देखिए मनोज जी, एक बात बहुत बड़ा विषय है और कई 100 चाइनीज एप्स, आपको हैरानी होगी कि चाइनीज कंपनीज की एप्स थी जिसमें कि लोगों से 10% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लिया गया और उससे भी ज्यादा इनफैक्ट इंटरेस्ट रेट लिया गया और बहुत लोगों को परेशानी की गई। तो सरकार ने कुछ एप्स भी बैन करी है और इन एप्स को रेगुलेट कर रहे हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लिस्ट बना रहा है। जैसा आपने बताया, एक वाइट लिस्ट बनाई जाएगी कि कौन सी एप्स लीगल है, रेगुलेटेड है और जो रेगुलेटेड एप्स हैं उन्हीं को अलाउ किया जाएगा लोन देना। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो जो कमजोर वर्ग, जो गरीब लोग हैं, उनको बहुत बुरी तरह से फंसाया गया है। और बिल्कुल मैं आगाह करना चाहूंगा लोगों को कि इस तरह की किसी भी ऐप से वो कोई लोन ना लें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऊंची दर पर इंटरेस्ट रेट लेते हैं। Very briefly, apart from this warning to our listeners, the U.S. market, we know that the the European Central Bank has raised the discount rate, and we expect the U.S. Fed also to do so in its next meeting. Is it also a ploy to invite more bond buying interest into the economy, G-Sec, because that's trading between 3 and 3.5% between 3 months and 30 years? Briefly. No, definitely. I mean, if you raise rates, in fact, the euro was facing that problem. It's not the US dollar. It is the euro which was facing that problem. The euro was falling vis-a-vis dollar. And whenever currency falls, investors, they go away from that currency. They withdraw money from that currency. So I think ECB's move to buoy their currency as well as to increase attraction for the bonds. I think it is important for them because they're going to run deficits. We all know European governments are going to run huge fiscal deficits in coming months. They need more investments into the region. Well, let's have a look at the oil market now. Brent crude was trading at $90.80 per barrel, while WTI crude prices were at $85.10 per barrel. Very, very briefly, you said Russian crude has grown from 2% to 14% now in terms of imports. How competitive do you see prices and coming down, especially in the global market? Briefly. So clearly, Russian oil has found its way not only to India but to Europe through China. In fact, that's what we learned this week, that China was importing crude from Russia and then exporting to Europe, etc. So clearly, I think all this has to resolve in the next few months. But my hope is that now oil prices are stabilizing and they will probably come down in the next few months. आइए चलें सर्राफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज सोने और चांदी के मूल्य में थोड़ी सी तेजी देखने को मिली। अंतर्दिवसीय कारोबार में अक्टूबर में आपूर्ति होने वाले सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 175 रुपए की बढ़त से 50,530 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। दिसंबर अनुबंध वाली चांदी 325 रुपए उछलकर 54,605 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना बढ़त के साथ $1,731.30 प्रति औंस और चांदी ऊपर आकर $18.60 प्रति औंस पर चल रही थी। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से पुनीत जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद मनोज। And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks logged modest gains amid positive global cues. Sensex finishes near 59,800. Nifty settles near 17,850 level. Rupee appreciates by 13 paise against the US dollar. And Brent crude oil prices rise to trade around $91 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
But